class. Hello friends, in this class we are going to solve previous year JEE Main questions of chapter Some Basic Concepts of Chemistry. Okay, let's start. This is the first question. What will be the mass ratio of ethylene glycol in 500 gram of its 0.25 molar aqueous solution and 250 ml of 0.25 molar aqueous solution? Is it necessary to manufacture? ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है इस केस में? वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल व्हेन द कंसंट्रेशन इज 0.25 मोलर एंड द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 500 ग्राम एंड इन सेकंड केस 250 ml के अंदर हमें फाइंड करना है कितना वेट होगा 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में. तो हमें सिंपली मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ओके, तो मोलैलिटी गिवन है अपने को फर्स्ट केस में कितना 0.25 दैट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम कितना है नहीं पता, हमें फाइंड करना है W1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है इथाइलिन ग्लाइकोल का गिवन है 62 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दैट इज 500 ग्राम. ग्राम को 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो 500 इनटू 1000. ओके, that is equal to in next second case 0.25 is equal to W2 upon molecular weight into weight of solvent in kg. यहाँ 250 ml में गिवन है तो ml एक्वस सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर वाटर. वाटर के लिए डेंसिटी कितनी होती है 1. डेंसिटी 1 होती है तो 250 ml is equal to 250 ग्राम. 250 into 1000. ओके, और अगर हमें W1 is to W2 निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस. ओके, 1000 से 1000 कट गया, 250 से 2 टाइम्स. ओके, 62 से 62 कट गया और 0.25 से 0.25 कट गया, यानी कि W1 अपॉन W2 कितना आ गया? तो W1 आ जाएगा 2:1. W1 अपॉन W2 कितना आ गया 2:1. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 100 ml of aqueous solution of pH 12, the number of millimoles of calcium hydroxide required to make it this much. Suppose complete dissociation. ओके, नाउ हमें वॉल्यूम गिवन है और pH गिवन है, हमें फाइंड क्या करनी है? मिलीमोल्स फाइंड करने हैं. अगर अपने को कंसंट्रेशन पता चल जाए तो मोल्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो पीएच कितना है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 12, तो पीओएच कितना हो जाएगा? पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 2. पीओएच आ गया यहाँ से. अब पीओएच क्या होता है इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस की कंसंट्रेशन. अपने को पीएच गिवन है 2 माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है. तो यहां से OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 10⁻⁻². अब देखेंगे, अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है कैल्शियम 2 प्लस 2 OH माइनस के अंदर. Now initially let the concentration of calcium hydroxide be X. Initially, okay, at particular time the concentration of calcium 2 plus become X and that of 2OH minus become 2X. Okay, now this concentration of OH minus is equal to this 10⁻⁻², means 2X is equal to 10⁻⁻².
Now x is equal to 0.5 into 10 to the power minus 2 mole per liter. This is the concentration. Now we have to calculate the moles. Concentration is equal to moles per liter. Okay, so here the concentration is 0.5 into 10 to the power minus 2, which is equal to moles upon volume is 100 ml. 100 ml is equal to 0.1 liter. 0.1 liter. Now 0.5 into 10 to the power minus 3 moles. Now this is equal to 0.5 5 into 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus 3. सही है. अब 10 to the power minus 3 कितना हो जाएगा? मिली, यानी कि 5 into 10 to the power minus 1 millimoles. And now the answer is 5. Here we write 5. Okay. Next question. The total number of moles of AgCl precipitated when AgNO3 is added to excess of 1 mole of each of the following complex is. Okay. Now the complex is CONH3 whole 4 Cl2Cl. When reacted with excess of AgNO3, it will result in the formation of AgCl. Now the top question is that how many moles of AgCl are formed? The number of moles of AgCl formed is equal to the number of moles of Cls which is present outside the coordination complex. In this case, the number of Cl presenting outside the coordination complex is 1 Cl. So the number of moles of AgCl formed is equal to 1. So 1 mole of AgCl is formed. Okay. Now in the second case, NiH2O whole 6 Cl2. In this complex, the number of Cl present outside the coordination complex is 2. Here 2 Cl are outside the coordination complex. तो कितने moles of AgCl बनेंगे? 2 moles of AgCl are formed. 2 mole AgCl formed होंगे. अब नेक्स्ट केस में क्या है? Pt NH3 whole twice Cl2. How many Cls are present outside the coordination complex? 0. So the number of moles of AgCl formed are 0. Okay. In next question, Pd NH3 whole 4 Cl2. The number of Cls which are present outside the coordination complex are 2 AgCl, 2 mole AgCl. Okay. The question is asking that total number of moles of AgCl precipitated 1 plus 2 plus 2, यानी कि 1 plus 0 plus 2 plus 2 is equal to 5. So 5 moles of AgCl are precipitated. Okay. Next question. Okay. 0.5 gram of a carbon compound X containing 60% carbon will produce 10 to the power minus 1 gram CO2 on complete combustion. हमें फाइंड क्या करना है? कितना कार्बन प्रोड्यूस, इतने ग्राम ऑफ CO2, कितना CO2 प्रोड्यूस होगा? CO2 की वेट फाइंड करनी है. तो देखो कंबशन रिएक्शन क्या होती है? X कोई कंपाउंड था कार्बन कंटेनिंग, जिसको हमने इन द प्रेजेंस ऑफ O2 गिव्स CO2 प्लस H2O. कितना है? 0.5 ग्राम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है. तो देखो
अगर अपने पास 12 ग्राम कार्बन होता है तो कितना देता है? 44 ग्राम ऑफ CO2 देता है। अगर 1 ग्राम कार्बन है तो कितना देगा? 44 बाई 12 ग्राम ऑफ CO2 देगा। 1 ग्राम ऑफ कार्बन कितना दे रहा है? 12 ग्राम ऑफ CO2। अब 0.5 ग्राम विच इज 60% कार्बन, विच कंटेन 60% कार्बन, कितना है? 60% कार्बन है, तो कितना देगा? 44 बाई 12 इंटू 0.5 इंटू 60 बाई 100। ओके, okay, now 44 by 40 gram of CO2, that is equal to 1.1 gram of CO2, that is equal to 11 into 10 is to power minus 1. So the answer is this one, 11. 11 into 10 is to power minus 1. Next, when phenol react with dilute nitric acid, it gives two products. Which of the following method would be most effective in separating the two products on a large scale? Okay, when a phenol, this is your phenol, react with dilute HNO3, what it will give? ये ऑर्गेनिक की एक रिएक्शन है जो हमें पता है, क्या देती है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। This is your orthonitrophenol this is your paranitrophenol. Now we have seen that orthonitrophenol containing hydrogen bonding, orthonitrophenol के अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। That is hydrogen bonding is present in orthonitrophenol। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये वाला कंपाउंड स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जा सकता है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फिर क्या होगा? स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, नेक्स्ट, the density of an aqueous solution of KCl is this much and molality is this much. The molality of this solution is, okay, now we have given that density is equal to 1.2 and the molality is equal to small m, that is equal to 3.3. Okay, now molality is equal to 1000 into molarity divided by 1000 into density minus molarity into molecular weight of KCl. Okay, now 3.3 is equal to 1000 m divided by 1000 d into 1.2 minus m into molecular weight of KCl is 39 for potassium and for chlorine is 35.5. Okay, 0.5 for 74.5 into 74.5. Okay, now 3.3 into 1000 into 1.2
minus 74.5 m, that is equal to 1000 m. Now 1.2 into 3.3 into 1000 minus is equal to 1000 m plus 74.5 into 33 m, 3.3 m यानी कि मोलरिटी. सो m कितना आ जाएगा, m कितना आ जाएगा 1000 1245.85 m is equal to 3960. Now m is equal to मोलरिटी कितनी आ जाएगी 3.17 which is approximately equal to 3. Okay, now next question. 3 gram of substance X is dissociated in 100 gram of CCl4 if it increase the boiling point by 0.6 Kelvin, then the molecular mass of the substance will be. Okay, अपने को क्या आगे मैंने increase in boiling point is this, यानी कि this is elevation in boiling point, that is equal to 0.6. Okay, now elevation in boiling point is equal to I into kV into m. M is the molarity and kV is the molar elevation constant or ebullioscopic constant. I is a Bentov factor. Now delta T is given 0.6 is equal to I into kV is 5 and m is molarity. Molarity is weight in gram upon molecular weight, हमें जो कैलकुलेट करना है, into volume weight of solvent in kg. 100 gram CCl4 means 0.1 kg. Okay, now we have to calculate I. Non-electrolytic solution, for the non-electrolytic solution I is equal to 1. So in this case I is 1. Okay, so molecular weight is equal to 0.6 into 0.1 by 50. Okay, 15. Now m molecular weight is equal to 15 by 6. Six to the 12, 35 यानी molecular weight आ गया. ठीक है, next, the number of significant figures in this. The number of significant figures are in this is 3. 3 significant figures are there. If a compound AB dissociated 75% in aqueous solution, the molarity of the solution which increases with boiling point of the solution by 2.5 Kelvin. Okay, delta T भी given है. Delta TB is equal to 2.5 Kelvin, and the molality of the solution which increase the boiling point, solubility by this much. मोलरिटी बतानी है, the molarity of the solution which increase the boiling point of the solution by 2.1. Okay, so delta TB is equal to I into kV into m. Delta TB is 2.5 I. Now our turn is to calculate I. I is equal to 1 plus n minus 1 alpha. Here I is equal to 1 plus n कितना है, AB type of compound है, means n is 2 minus 1 alpha कितना है
75% dissociation. Degree of dissociation is 75 by 100. Okay, I is equal to 1 plus 70, 2 by 3. Okay, 2 by 3, that is 3 by 4. Okay, (75 by 100), that is equal to 2 minus 1 is 1, 75 by 100. I is equal to 3 by 4, 1 plus 25, so 3 by 4, that is equal to 7 by 4. Then I is equal to 1.75. I आ गया 1.75 into kV is 0.52 into molarity is the molarity of the solution. ये फाइंड करना है अपने को मोलारिटी. So m is equal to 0.25 divided by 1.75 into 0.52, that is equal to 7 times into 0.52. इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा मोलारिटी? 2.75 आएगा इसको कैलकुलेट करने पर. 2.75. Okay, which is approximately equal to 3. So the right answer is 3. Okay, this is the last question. Consider the titration of NaOH versus oxalic acid. The following viewed data were obtained at the end point. ये अपने को वॉल्यूम गिवन है किसकी? NaOH की वॉल्यूम गिवन है ब्यूरेट में. ब्यूरेट में क्या लिया है अपन ने? NaOH. ये ब्यूरेट थी. ब्यूरेट के अंदर अपन ने क्या डाला? NaOH. नीचे बीकर में क्या लिया? कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अपन ने क्या लिया? ऑक्सैलिक एसिड. ओके, ऑक्सैलिक एसिड लिया. सो N1B1 is equal to N2B2. वॉल्यूम ऑफ NaOH कहाँ है? वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना है? 1.4. तो और नॉर्मेलिटी कितना है इसका NaOH का? देन द मोलरिटी ऑफ द NaOH फाइंड करनी है. एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर इनटू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड के लिए कितना है? M2B2. Now n factor for NaOH is, this is for NaOH and this is for oxalic acid. n factor for NaOH is 1 into molarity हमें find करनी है and volume of NaOH is 4.4 into 4.4, that is equal to N2. N factor for oxalic acid is 2 into molarity is 1.25. 1.25 into volume is volume of oxalic acid is given, which is 10 ml. 10. So M1 is equal to 2 into 1.25 into 10 divided by 4.4. इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा? 50.2.50 into 10 यानी कि 25 by 100. 25 by 4.4. तो M1 कितना आ जाएगा यहाँ से? M1 आ जाएगा 6. अप्रोक्सीमेटली 5.8 आएगा ये. दिस इज इक्वल टू 5.8 which is equal to 6. Okay, so the answer is 6. Okay, 10 gram of a substance X contain it
6.023 into 10 to the power 22 molecules, the molarity of a solution of 5 gram of substance X in 2 liter solution will be. मोलरिटी फाइंड करनी है किसकी, एक्स की. ओके, 10 ग्राम ऑफ एक्स यानी कि वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज पता नहीं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दीज आर मोल्स. देखो मोल्स इनटू Na इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स. तो मोल्स आ गए वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट and Na is equal to 6.023 into 10 to the power 23 which is equal to molecules कितने 6.023 into 10 to the power 22. Now ये कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 10, 10 बचेगा यानी कि 100. mx is equal to 100. Now the molarity of the solution of 5 gram of a substance X in 2 liter. मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम इज 2, वॉल्यूम इन लीटर. ओके, सो द मोलरिटी इज कैपिटल M इज इक्वल टू वेट इज 5 ग्राम अपॉन 5 ग्राम वेट गिवन है, molecular weight of X is 100 into volume is 2 liter. So M is equal to 20 times 1 by 40. So the molarity is 1 by 40 which is equal to 25 into 10 to the power minus 3. 25 into 10 to the power minus 3. Okay, mole per liter. That's all for the today's class. From next time we are going to solve remaining questions. Okay. ओके, ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम आगे. ओके, थैंक यू.